जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की लाइव स्ट्रीम में हम डायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। डायनेमिक्स के टॉपिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल डिस्कस। मोमेंटम, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक विलियन। सो एक सेकंड, मेरी आवाज़ इको कर रही थी, सॉरी। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके मैं ज़रा फैक्ट्स से आपको गो थ्रू करा दूं कि इस चैप्टर के जो फैक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है। जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, ये आपको पता होनी चाहिए कि जी इसमें सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी जो हम इंटरेक्ट करेंगे वो है मोमेंटम। सो एवरीबडी शुड नो कि जी मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड इट इज इक्वल टू एम वी। ठीक है। एक सेकंड। So product of mass and velocity is a momentum and it is a vector quantity because velocity is a vector quantity. जब आपके पास एक स्केलर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। ठीक है। सो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। वी विल सी कि हाउ टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम। लेट्स से बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन आती है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और जिसकी स्पीड जो है वो v है। इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस सरफेस के साथ कोलाइड करके वापस जा रहा है विद द सेम स्पीड। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इनिशियल मोमेंटम अगर आप इसका ले लेते हो, अब आप साइन कन्वेंशन लोगे तो अगर आपके पास इफ़ यू टेक दिस एज पॉजिटिव, फाइनल वुड बी नेगेटिव। तो ये मोमेंटम जो है पॉजिटिव एम वी होगा, दैट वुड बी नेगेटिव एम वी। याद रखना, दिस इज स्पीड, दीज आर स्पीड्स। सो वेलोसिटी के लिए आपने साइन लगाना है। सो चेंज इन मोमेंटम वुड बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो दैट इज माइनस टू एम वी। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज टू एम वी। नॉर्मली मैग्नीट्यूड की बात करता है तो मैग्नीट्यूड जो है आप टू एम वी लिखेंगे। ठीक है। इससे हर स्टूडेंट का आंसर जो है वो सेम ही होगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए साइन कन्वेंशन जो भी आप मर्जी ले लें, इसका अपोजिट ले लें। राइट साइड को आप नेगेटिव ले लें, लेफ्ट साइड को आप पॉजिटिव ले लें, तो दैट विल बी टू एम वी। अच्छा जी। दूसरी बात बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ आता है। न्यूटन सेकंड लॉ की जो डेफिनेशन होगी वो नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इससे डिफाइन नहीं करना है फिजिकल टू एम ए। ये स्पेशल केस होता है, ये तब एप्लीकेबल है व्हेन मास इज कांस्टेंट। सो नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही फोर्स की भी डेफिनेशन है, यही न्यूटन सेकंड लॉ की भी डेफिनेशन है। अब आप देखें, अगर आपके पास मोमेंटम टाइम ग्राफ होगा, इधर मोमेंटम होगा और एक्स एक्सिस पे टाइम होगा, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए इस इक्वेशन के साथ से कि इसका ग्रेडियंट जो है वो नेट फोर्स होगा। ठीक है। इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट का ग्रेडियंट उस पॉइंट्स को ए बी सी डी को कंपेयर करें तो रिजल्टेंट फोर्स पॉइंट सी पे ज़ीरो है, रिजल्टेंट फोर्स पॉइंट बी पे सबसे ज़्यादा है, रिजल्टेंट फोर्स पॉइंट ए पे भी ज़ीरो है, इसका ग्रेडियंट ज़ीरो है, और बी पे भी नॉन ज़ीरो है। तो अगर पूछा जाए, ये पास पेपर का क्वेश्चन है कि किस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स सबसे ज़्यादा है, और इसी इक्वेशन के तहत एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अगर मैं डेल्टा टी को उठा के इधर ले आऊँ तो ये आपके पास इम्पल्स बन जाती है। अगर आपके पास फोर्स, नेट फोर्स और टाइम का ग्राफ है तो एरिया वुड बी चेंज इन मोमेंटम। एरिया वुड बी चेंज इन मोमेंटम, ये याद रखना आपने ज़रूरी है। और इसी फर्स्ट लॉ से, सॉरी एफ सेकंड लॉ की इस शेप को, अगर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट हो तो हम इस इक्वेशन को इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स ज़्यादा करोगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा।
अगर एक जैसी रिजल्टेंट फोर्स डिफरेंट मैसेज पे लगाओगे तो लार्जर मैस पे जो है वो आपके पास कम एक्सेलरेशन होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ए एंड एफ आर ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। देखिए, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और वो पूछता है इसका फोर्स टाइम ग्राफ कैसा होगा, नेट फोर्स, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन को मैथ से मल्टीप्लाई करें तो फोर्स बनता है। तो जिस तरह इसका ग्रेडियंट होगा उसी शेप में रिजल्टेंट फोर्स होगी। तो आप देख लें, टिल दिस पॉइंट ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ इज कांस्टेंट, सो फोर्स वुड बी कांस्टेंट। फिर क्या होगा, इस जगह से इस जगह तक ग्रेडियंट, फिर थोड़ा सा इस जगह तक ग्रेडियंट जो है आपका जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। मगर इस पार्ट का ग्रेडियंट इस पार्ट के ग्रेडियंट से ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा वैल्यू। आफ्टर दैट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ग्रेडियंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो जीरो हो जाता है। सो फोर्स जीरो हो जाती है। तो जिस तरह ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट को मैथ से मल्टीप्लाई करें तो वही शेप आपके नेट फोर्स की बनेगी। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट उतनी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे लगाएगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये बात पता होनी चाहिए कि एक्शन रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शन जो है वो एक बॉडी पे नहीं लगते, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एक्शन रिएक्शन इज ऑलवेज अपोजिट, एक्ट एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं कि एक्शन 2 मिनट पहले हुआ रिएक्शन, और दे आर सेम टाइप ऑफ फोर्सेस। दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन और रिएक्शन पेयर, जिसकी बेस पे आप फोर्सेस को। अब देखें, बुक के ऊपर फोर्स क्या लग रही है, वेट। वेट कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, तो उसका रिएक्शन जो होगा वो अर्थ पे होगा, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। एक क्या है, बुक बुक के ऊपर एक टेबल भी फोर्स लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका रिएक्शन किस पे होगा, टेबल पे होगा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। बुक ऑन फोर्स ऑन द बुक ड्यू टू टेबल, रिएक्शन इज फोर्स ऑन द टेबल ड्यू टू बुक। और ये फोर्स ऑन बुक ड्यू टू अर्थ, और ये जो है दैट इज फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू बुक। तो दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। ये भी एक सिचुएशन है। अब देखें, ये मैस यू कैन सी कि ये मैस है, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। वेट इज ड्यू टू अर्थ, तो इसका रिएक्शन जो होगा वो ये होगा, अर्थ पे होगा, ठीक है। ये फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स ऑन बुक ड्यू टू अर्थ इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स पे, इसका रिएक्शन जो है ये होगा। W is on the box due to earth, A is on earth due to box. So W and A are action reaction pair। बाकी दूसरा समझा चुका हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इनका टोटल मोमेंटम जो है m1u1 प्लस m2u2 विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये जब आपस में टक्कर मारते हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, वो फोर्सेस इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, न्यूटन थर्ड लॉ। और उसके बाद जो है फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। तो ये लॉ न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बेस पे निकाला जाता है। अगर टू डायमेंशन में हो, ये ऑब्जेक्ट आके इसके साथ टक्कर मार रहा है, और बाद में एक ऑब्जेक्ट इधर जाता है, एक ऑब्जेक्ट इधर जाता है, तो मोमेंटम बोथ डायरेक्शन में कंजर्व होगा, ठीक है। Total momentum in any direction will be conserved. This is very important to understand. So along x-axis, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इज टोटली along x-axis. So m1 u1, ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, m2 u1, ठीक है। m1 u1 ये गलती से लिखा हुआ है m2 u2, और इसका m1 v1 इसका ये कंपोनेंट लेंगे, m1 v1 cos थीटा वन, और दूसरा इस, इसका, x कंपोनेंट क्या होगा,
m2 v2 cos थीटा 2, दिस इज along x एक्सिस। y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कोई नहीं है, सो जीरो। इसका y कंपोनेंट जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, m1 v1 sin थीटा 1, और इसका y कंपोनेंट जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो ये आपने दोनों डायरेक्शंस में मोमेंटम को ऐसे लेके चलना है, ठीक है। इज देयर एनी क्वेश्चन? सो मोमेंटम जो है बोथ डायरेक्शन में आपने कंजर्व कराना है। अच्छा बच्चों, अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट इलास्टिक विलियन पे। इलास्टिक विलियन पे क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहते हैं। टोटल मोमेंटम वैसे भी आइसोलेटेड सिस्टम में होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज ऑलवेज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। ये इलास्टिक विलियन का रिजल्ट है। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो बॉडीज की रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, रिलेटिव स्पीड ऑफ relative speed, if the relative speed of approach is equal to relative speed of separation, then it will be an elastic Coulomb. Okay, is that clear? Now let's see how to find speed of approach in different situations. Okay, so in this case, if two objects are coming closer to each other, then the relative speed of approach will be the sum of these two. Okay, and in this case they are moving apart from each other, so speed of separation would be v2 minus v1. So these are different situations where you can find relative speed of approach and relative speed of separation. For example, if an object is moving with speed of 50 meter per second and another object is moving with speed of 60 meter per second, then what would be relative speed of separation? Why we call it as separation? Because the speed of this object is greater than the speed of this object. So with the time they will be getting further apart from each other. So relative speed of separation in this case would be 10 meter per second. There are two possibilities. If they are coming closer to each other, then relative speed of approach will be the sum of these two. And in this case, if they are moving in this way, then the relative speed of separation would be 10. For example, if I say this object is moving with speed of 70 and another object is moving with speed of 60, they are approaching to each other. So what is speed of approach? That would be 70 minus 60, that is 10 meter per second. So the speed of approach in this case would be 10 meter per second. And speed of separation in this case would be 10 meter per second. That is an example of elastic Coulomb. Okay. So if they are moving apart from each other after Coulomb, let's say its speed is u1 and its speed is u2. So what would be relative speed of separation? In this case, relative speed of separation would be u1 plus u2. This is very important to understand. That's why I am putting too much stress on this. So in case of an elastic Coulomb, that would not be, relative speed of approach would not be equal to relative speed of separation. I hope you are getting it. So somebody is asking a question, only dynamics. We will discuss only dynamics. We will discuss all subtopics of dynamics. Okay. So this was the total summary of this chapter. Now let's move towards past paper situations. My workbook, my topical workbook is organized in increasing order of difficulty, which is the unique feature of this topical. So you will face an easiest question first, and then as you move
forward, the challenging question would be welcoming you. So let's do this first question. An object traveling with velocity v strikes a wall and rebounds as shown. Which property of the object is not conserved? First, look at the diagram. The speed before and after is same, but velocity is not same. Do you think velocity is same? So the answer is velocity is not same because the direction is not same. So if velocity before and after is not same, that means momentum is not same. But is the kinetic energy same? So kinetic energy depends on speed. So kinetic energy is same. That is conserved. Conserved means the quantity, the property that is unchanged. Kinetic energy is unchanged. Mass is mass is unchanged. But momentum is changed because this momentum is, if we say the mass of this object is m, so initial momentum, if we say positive mv, then the final momentum would be minus mv. That means momentum has changed. The magnitude of momentum is same, but the direction has changed, so momentum has changed. Okay? But the speed is same. So what is the answer to this question? Which property is not conserved? So answer is momentum. Momentum is not conserved. All other three quantities are conserved. Okay. Now let's do question number 2. I request all of you to focus on this question and give me your answer. So I will be waiting for you people to solve this question and answer it. A lorry of mass 20,000 kg is traveling at this speed. Okay, 20 meter per second. A car of mass this 900 kg is traveling at this speed. What is the magnitude of total momentum? So we have to find total momentum and then we have to tell its magnitude. I am waiting for your answer. I hope you can easily do it. So those who are watching are requested to answer question 2. So let me explain. The momentum of this lorry is, okay, so the answer is C. Let me explain. Let me confirm. So the momentum of lorry is 20,000 times 20. So all answers are given in kilonewton second. You know, momentum is, force is delta P over delta T. So we can write another unit of momentum by this equation, which is Newton second. So another unit for this is Newton second. Okay. My screen. Okay. So Newton second is another unit of momentum. So बच्चों, let me explain. 20,000 times 20, that is, you can say the momentum of this is 400,000 is the momentum of this object. We can say this is, if we convert this is in kilo, that is 400 kilonewton second.
400 kilonewton second. And the momentum of this is, if we are taking momentum of this as positive, the momentum of this would be negative. So 900 times 30. 27,000. So which is 27 kilo Newton. It's negative. So we have to find total momentum. So answer is not C. Answer is 400 kilonewton minus 27 kilonewton. So the answer is 373 kilonewton second. Look, we have to find the, the magnitude of total momentum. First, we have to find the total momentum, then we have to find its magnitude. Did you get that? Okay, let's move towards next question. A molecule of mass m traveling horizontally with velocity u hits a vertical wall at right angles to its velocity. It then rebounds horizontally with the same speed. What is the change in momentum? I have done it before, so you should be able to answer it. Question 3. I am waiting for it. So initial velocity speed of the object was u and final speed is also u. So the momentum is, oh, that's great. So if its mass is m, initial momentum is mu and the final momentum is minus 2 mu. Sorry, minus mu or minus mu minus mu, that is minus 2 mu. Okay, that's great. Okay, so uh, we will jump to the next subtopic. If you want to solve this question, you can take screenshot and then you can share your answer in the comment. Just take screenshot. This as well. This is same question. Initial velocity is given, mass is given, final velocity speed is given. What is the magnitude of change in momentum? The same thing. Okay, in this case, you have to convert this mass into kg. So 100 gram, in 1 kg, you have 1000 grams. So the mass is 0.1 kg. Okay. 0.1 multiplied with 20 would be 2 and it's 3. So if we take this as negative 3, there the answer would be, I am waiting for your answer. So what's your answer for this question?
Okay, it's 5 kgms minus 1. Okay, ji. So let's move towards the second subtopic, that is Newton's second law. So first two questions are very simple. Try to answer them. Yes, it is C, the rate of change of momentum. You are right. You know, the definition of force, as I told you, is delta P over delta T. The mass multiplied with its acceleration is not the definition of force. Okay, this is not the general law that is only applicable when mass is constant. Okay, so whenever you have to define the force, you should define it using this equation. What about second question? Resultant force causes body to accelerate. What is equal to the resultant force? Again, this is same. Change in momentum per unit time. Change in momentum of the body per unit time. What's question 3? A car accelerates from rest. The graph shows the momentum of the car plotted against time. What is the meaning of gradient of this graph at particular instant? In this graph, you have to use the same concept. Delta P over delta T is resultant force, so resultant force on the car. That is the gradient at particular time. So the gradient of this graph would be resultant force. Very simple. Let's do question 4. I leave this question to you and I am waiting for your answers. मुझे जल्दी नहीं है, मैंने आपकी ब्रेन पावर इंप्रूव करनी है. सो यू हैव टू आंसर इट. ये हम मिल के कर रहे हैं बेसिकली. वी ऑल आर डूइंग इट. If you like my video, then you are requested to share it with your friends and like and comment this video. What is the answer to question 4? Oh, you say it is C. Let me confirm. Mass is given. He is talking about average force. Force is delta P divided by delta T. The Coulomb lost for this much. So the time is 0.1 second. What is change in momentum? 12 times 0.5, that is 6. If we take this as positive, 8 times 0.5, that is minus 4. So final momentum is minus 4. Initial momentum is 6. So minus 10 divided by 0.1.
So that would be minus 100. He is talking about minus sign shows over here as the direction of force. So the magnitude of force is 100 Newton. अगर आप if you take final momentum as positive, then initial momentum would be negative. Then it would be final momentum minus for change initial momentum divided by time, which is 0.1. So that would be 10 over 0.1, which is 100 Newton. Okay. What about question number 5? You are given momentum time graph. Okay. Can anybody tell me the answer? It is the same concept. Same. So momentum time graph is given, and the gradient of this graph would be the resultant force. How to find gradient? Gradient of the straight line is constant, and that is rise, which is 5000. Unit is standard kgms minus 1 divided by t. So 5000 divided by 10. So the answer is 500. Answer is 500. Very simple. ये क्वेश्चन हमने कुछ बेसिक आइडिया के लिए कर लिए हैं. बाकी कंसेप्ट वही है, जैसे व्हाट इज द एवरेज फोर्स, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी. आपने यू हैव टू पुट द साइन बाय योरसेल्फ. एग्जामिनर नॉर्मली ये जब एरो डाल देता है तो उसने बोल दिया कि वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन इज 14 एंड वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन इज 7. सो यू हैव टू पुट द साइन बाय योरसेल्फ. ठीक है. व्हाट इज द एवरेज फोर्स, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है. ये भी मोमेंटम टाइम ग्राफ है, and till this point there is no change in momentum, so resultant force is 0. फिर यहाँ पे resultant force आ रही है. Brakes are applied. What is the resultant force on the cycle during period when brakes are applied? So you have to find gradient of this part. ठीक है, इसमें ज़रा आपने alert होना है. Gradient of this part के लिए you have to use rise divided by run. So this is 100. The rise would be 300 and run would be this time. You can see it by yourself. Okay, इसको मेजर कर लो.
सॉरी, इसको देख लो कि कितना है। आई शुड नॉट वेस्ट टाइम। सो 300 डिवाइडेड बाई दिस। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुका हूँ। मोमेंटम टाइम ग्राफ, एट विच पॉइंट डज द रिजल्टेंट फोर्स हैव द लार्जेस्ट वैल्यू? किस पॉइंट पे द फोर्स इज लार्जेस्ट? देख लो कि कितना है। अभी वी हैव टू डू अदर सब टॉपिक्स एज वेल। सो ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ इज फोर्स। सो यू हैव टू सी के ग्रेडियंट कहाँ पे मैक्सिमम है। इधर ग्रेडियंट जीरो, सो फोर्स जीरो। यहाँ बी पे ग्रेडियंट इस तरह, सी पे ग्रेडियंट जीरो, फोर्स जीरो। डी पे ग्रेडियंट इस तरह। इफ यू कंपेयर द ग्रेडियंट एट पॉइंट डी एंड बी, तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि किस पॉइंट पे स्टीपनेस ज़्यादा है। सो स्टीपनेस एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन द स्टीपनेस एट पॉइंट बी। सो द रिजल्टेंट फोर्स इज लार्जेस्ट एट पॉइंट बी। द रिजल्टेंट फोर्स इज लार्जेस्ट एट पॉइंट बी। ओके। ये भी एक अच्छा सवाल है। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन बॉडी। Resultant force of 10 Newton acts on body for 2 seconds. Time is given or momentum time graph is given. We have to pick the right graph. May I will give you a chance to think about this question. चले बच्चों, show your participation. जितना आप इन्वॉल्व होकर करेंगे ना, इतना फायदा है, अदरवाइज फायदा नहीं है। लाइव स्ट्रीमिंग का पर्पस फिर खत्म हो जाएगा ना। क्वेश्चन 13। लाइव स्ट्रीमिंग का यही फायदा है कि मैं आपको रोक के सोचने पे लगा रहा हूँ। I am giving you the chance to think. हैंड दे सकता हूँ। The gradient of the graph should be 10 because the resultant force is 10. The gradient should be 10. आप देखें हर ग्राफ का किसका ग्रेडियंट 10 आ रहा है। देखो बच्चों, अगर हम इस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, ए ऑप्शन, लेट्स सी, इसका मैं, देखो सबका रन जो है दिस इज सेम फॉर ऑल ग्राफ्स। So the net force is the gradient. That mean if net force is 10, that is rise over run. This is 2. So rise should be 20. अब आप देखिए rise 20 किस में है।
डी में देखो तो रन इज 5। सी में देखो रन इज 10। 10 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी फोर्स सी की बनती है 5 न्यूटन। डी की बनती है 5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5 न्यूटन। बी की बनती है 20 डिवाइडेड बाय 2, 10 न्यूटन। ए की बनती है 20 - 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 न्यूटन। ठीक है। सो रिजल्टेंट फोर्स इन सी एंड ए आर सेम, लेकिन हमने रिजल्टेंट फोर्स 10 ढूंढना है। कंडीशन ये है, तो दैट इज इन ऑप्शन बी। ठीक है। एनी डाउट? So there is no doubt. No news, good news. ओके बच्चों, बाकी चीज़ें आप यू कैन डू। हाँ, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम p है, और ये थीटा के साथ, इस सरफेस के साथ कोलाइड कर रहा है। मई जून फेब मार्च 21 का क्वेश्चन है। ठीक है, आपने आइडिया क्लियर करना है। जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन हर साल के कंसेप्ट वही होते हैं। और आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द सरफेस इट्स मोमेंटम इज p, और एंगल सेम है, थीटा है। What is the magnitude of average resultant force acting on the ball during the collision? चैलेंजिंग क्वेश्चन है। चैलेंज क्वेश्चन है। आई एम वेटिंग कि कौन मुझे इसका जवाब देगा। यू हैव टू फाइंड द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स। मुझे वेट करना पड़ेगा, तो मैं वेट करता रहूंगा। देर इज नो प्रॉब्लम फॉर मी। अपनी नोटबुक निकालें, उस पर करें, और फिर मुझे बताएं। नोटबुक निकालें, उस पर करें, और फिर
चलो जी, अब कोई बता दे। वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स और मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम इसको रिजॉल्व करेंगे। ये इनिशियल मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स हैं। दिस इज पी साइन थीटा, दिस इज पी cos theta. After momentum, we have these two components. Arrows are important. This is p sin theta, this is p cos theta. So what is change in momentum? If you look, horizontal component is unchanged, whereas vertical component has changed. You can see its arrows. So if we take this as negative, that would be positive. So the change in momentum is p sin theta minus p sin theta divided by t, that would give us force. So that is p sin theta plus p sin theta, which is 2p sin theta divided by t. This is resultant force acting on the object. Okay. So the answer is D. अच्छा जी, अब स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, we have to use F is equal to ma. If force F is applied to a freely moving object at one instant of time, object has velocity v and acceleration a. Which quantity must be in the same direction? This is very good question, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। बच्चे समझते हैं नेट फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। सो आप लोग क्या कहते हो, ए और वेलोसिटी हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे, या ए एंड एफ हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे, या वी एंड एफ सेम डायरेक्शन में होंगे, या तीनों सेम डायरेक्शन में होंगे? सो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ए एंड एफ दे आर ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। ए एंड एफ आर इन द सेम डायरेक्शन। ए एंड वेलोसिटी कैन बी इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे एक ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप, no resistance, so net force is downward, so acceleration would be downward. So acceleration and velocity can be in different direction. If acceleration and velocity are in different direction, object will slow down. Okay. If an object is coming down, velocity is down, acceleration is down, it will be speeding up. Then you have to apply, this is force, this is acceleration, and there is some force acting in this direction. We have to find the frictional force. Acceleration is given. Okay, so you have to apply, first find the net force, and the net force is equal to m times a. Time is short, so I am skipping. In case of inclined plane, this is force in the forward direction, and a brake weighing 20 Newton rests on this. The weight of the brake is component is 10 Newton. What is the acceleration of the brake down the plane? You know acceleration is in the direction of net force, and we know the net force is in the downward direction. And the net force is 6 Newton. 6 Newton is equal to mass time, if weight is 20 Newton, so mass would be, you can take G as 10, ठीक है इधर, अदरवाइज 9.8 1 लेना होता, तो G को 10 लेंगे तो mass would be 2, acceleration would be 3, ठीक है। ये भी एक अच्छा सवाल है। This object is sliding down and acceleration is downward direction. This upward force is F. We have to find F. Acceleration is A. So on inclined plane, we resolve weight. ये भी theta होता है. If this is theta, that is theta. This component is mg cos theta. The downward component is mg
साइन थीटा। ठीक है। सो डाउनवर्ड कंपोनेंट इज एम जी साइन थीटा, अपवर्ड फोर्स इज एफ, सो एम जी साइन थीटा minus f is equal to ma. We have to find f, so that would be mg sin theta minus ma is equal to f. So if I take mass as common, I will be getting g sin theta minus a. This is f. G sin theta minus a. So C is right answer. Okay, बच्चों. That is the application of f is equal to ma. इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इधर फोर्स लग रही है 4, इधर फोर्स लग रही है 3। when the when the person hand is removed, तब देखें डाउनवर्ड फोर्स ये होगी, अपवर्ड फोर्स आपको पता है इनिशियल वर्टिकल एक्सेलरेशन। सो वी विल रिजॉल्व these two forces and find their components along this vertical direction, that is 4 cos 37 and 3 cos 53, they will be acting in the upward direction, and 12 is in downward direction, so we will equate the net force to ma. I'm skipping. This question is interesting. Force time graph is given, so we have to pick speed time graph. So gradient of, if it is moving in the straight line, okay, then gradient of this would be net multiply by mass would give us force. Gradient of this part is constant, so acceleration would be constant, so force would be constant. Okay, till there is no speed, acceleration is gradient is 0. That's why force is 0. So answer to this question is A. We have to, in next video, we will be discussing momentum, law of conservation of momentum, elastic, inelastic, and pulley questions. For pulley questions, you can, if your concept of pulley is not clear, then you can get a video from my channel with title Connected Bodies, and you can clear your concepts. I will explain how to find acceleration in this case. For this object, the downward force is mg and the tension is upward force. Tension is always towards the pulley, and for this is downward force is. If I write Newton's second law for this capital M, that would be mg minus t is capital M A. This is for capital M. And for small m, t is greater than mg. So I would write t minus mg, that is net force, is equal to ma. T minus mg is ma. How can I solve these two equations? So minus t plus t, if I add these two equations, they will cancel and I will be left with mg minus small mg, that is equal to ma plus ma. So if I take a common, I will be left with एक सेकंड यार, वन नोट गायब हो गया। चलो यहाँ पे इत्तेफाक करते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन में वी विल बी सॉल्विंग। सो वी आर बैक।
अच्छा जी, हम ये कर रहे थे। ये मैंने बोला था कैंसिल हो जाएगा, सो एम जी माइनस स्मॉल एम जी एम ए प्लस एम ए, सो एम जी माइनस एम जी डिवाइडेड बाय एम प्लस स्मॉल एम इज इक्वल टू ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ, इफ आई टेक जी कॉमन, सो आंसर इज बी। ये आप याद भी कर लें फिर भी काम चल जाएगा, अगर याद नहीं कर सकते तो फिर ये। दूसरा इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि इन दोनों मैसेज में से इनको एक सिंगल यूनिट कंसिडर करें पूरे सिस्टम को, और देखें कि आगे की फोर्स क्या है, तो एम जी आगे की फोर्स लिखते हैं, और बैकवर्ड फोर्स, फिर इंटरनल फोर्सेस को इग्नोर करेंगे टी को, तो बैकवर्ड फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट्स पे क्या लग रही है, माइनस एम जी ओवर देयर मैसेज का सम, ये एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। ओके बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।